So, hello everyone. Let us begin with our new chapter, the new king and kingdoms. So, till now we have seen the pretty good amount of knowledge, right? We saw in our last class, in class 6, we saw about the ancient history, right? Right. Now, but in this class, we are going to deal with our medieval history. In medieval history, we are going to see the pretty good number of the kings and kingdoms and those kings who have come from the outside of the India. There will be the sultans, Muhammads, and everyone, right? There will be the Delhi Sultanate, Rajputanas, Marathas, and everyone, right? So we are going to deal with each and everything. But in this chapter, we are going to first see the starting of the medieval India. In this chapter, we are going to see the first emperors who were there in the starting of the medieval India, right? So let us begin with it. So this is the Connous triangle. What is Connous triangle? It is nothing, just a simple stuff. Here is a place known as Connous, right? And these are the three emperors: Gujar Pratiharas, Rashtrakutas, and Pals. What? So what they used to do? These were the first three empires, first three kingdoms after the completion of the ancient history, right? After the completion of the Harsh Empire, right? As the Harsh Empire was disintegrated, जैसे ही हर्ष का empire जो था वो disintegrate हुआ, मीन्स टूटा, तो लाइक वो इन तीन empires में divide हो गया. फर्स्ट थे गुजर प्रतिहारास, देन पाल्स एंड देन राष्ट्रकूटास. अभी कन्नौज ट्रायंगल क्या है? इन तीनों एम्पायर के बीच में फाइट एक ही चलती थी. किस चीज़ की फाइट? कन्नौज की. बिकॉज जैसे आज हमारे यहाँ कैपिटल क्या है? दिल्ली. हम कैपिटल सिटी किसको मानते हैं? दिल्ली. एट दैट टाइम द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द प्रीशियस सिटी वॉज द कन्नौज. तो उस टाइम पे कैपिटल किसको माना जाता था? कन्नौज को. ये तीनों एम्पायर हमेशा इसी के लिए लड़ते थे. मीन्स पहले गुजर प्रतिहारस जाके लेके आएंगे. जैसे ही गुजर प्रतिहारस ने कन्नौज के ऊपर अपना कब्जा कर लिया, देन पाल्स अटैक कर देंगे या फिर राष्ट्रकूटास अटैक कर देंगे. और ये तीनों सिर्फ कन्नौज के पीछे लड़ते रहते थे. एज सिंपल एज लाइक ऐसा होता है ना बच्चों के अंदर, एक को एक चीज़ दिला दी तो दूसरा गुस्सा हो जाता था, दूसरे को दिला दी तो वापस गुस्सा हो जाता था. तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही चलता था. ये एक दूसरे से किस चीज़ के लिए लड़ते रहते थे? कन्नौज के लिए. तो ये तो पहले थ्री एम्पायर्स. रिमेंबर दिस थिंग. ये चीज़ें याद रखोगे ना तो बहुत इफेक्टिव होगा. हमारे पास कौन से हैं? गुजर प्रतिहारस. हम उनका रीजन कौन सा देख पा रहे हैं? दिस इज द राजस्थान एंड गुजरात रीजन, राइट? कहाँ पे दिख रहा है ये? राजस्थान गुजरात वाले रीजन में. पाल्स कौन से रीजन में है? ईस्टर्न इंडिया में, राइट? एंड राष्ट्रकूटास सदर्न इंडिया में, राइट? तो दीज वर द फर्स्ट थ्री एम्पायर्स which exist at the time of the medieval period. Then there is one more important period, one more important empire, that is the Cholas, right? This blue region you can see, right, in the southern India, this is the Cholas empire. And this pink region, right, what is this pink region? This is the influence of the Cholas. Means चोला का मेन एम्पायर तो ब्लू वाला था, बट उनका इन्फ्लुएंस, उनका मीन्स यहाँ पे भी इनको कमांड चलता था, यहाँ पे भी इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते थे. डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली वो यहाँ पे भी कंट्रोल करते थे. तो ये पूरा था चोला का. इवन आप देख सकते हो इंडियन किंग्स कितने लाइक ग्रेट थे. ये तो रहा इंडिया, सदर्न इंडिया, राइट? दिस इज श्रीलंका. एंड व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? व्हाट आर दिस? दिस इज द इंडोनेशिया, राइट? इंडोनेशिया, लाओस. और ये फॉरेन कंट्रीज है. फॉरेन कंट्रीज में भी इंडियन रूलर्स का इन्फ्लुएंस था उस टाइम पे. यू कैन सी दिस. सो दिस वाज द केस एट दैट टाइम. लाइक ये था हमारा चोला एम्पायर. सो हमारे फोर मेन एम्पायर उस टाइम पे थे. सदर्न इंडिया में एट द लोएस्ट सदर्न इंडिया चोला एम्पायर, राइट? इन द नॉर्दर्न इंडिया गुजर प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास एंड पाल्स. फाइन. सो दिस वाज द केस इन द एट दैट टाइम. तो मैंने पहले आपको मैप इसलिए दिखाया सो दैट आपके माइंड में पिक्चर बने, राइट? व्हेन वी आर गोइंग टू लर्न दिस, सो एट दैट टाइम यू शुड हैव दिस नॉलेज इन योर माइंड दैट what part of India we are talking about, right? What part of India we are dealing right now. So that is why I showed the pictures first, the maps first. Now we are going to learn about the empires, their administration and each and everything, right? So stick with us. Let us begin. Emergence of the new dynasty.
how this new dynasty emerged. By the 7th century, there were a big landlords or the warrior chief in the different regions of the subcontinents. Existing kings often acknowledged them as their subordinates and the samantas. They were expected to bring the gifts for their kings and the overlords by presenting at their court and providing them the military support. As the samantas gained power and the wealth, they declared themselves to be the Mahasamanta and Mahamandleshwar and so on. Sometimes they are assigned their independence to their overlord. Fine. So क्या बताया, like what they are speaking to us, they are like कि at the time of the king period, right, the king exists, but there are the great warriors and the big landlords. Means वो लोग होते थे जिनके पास बहुत बहुत वेल्थ था, बहुत मीन्स बहुत पैसे थे, बहुत सब लैंड था, बहुत सब कुछ था, तो वो किंग्स को गिफ्ट प्रेजेंट करते थे. लाइक मेरे पास बहुत वेल्थ है, मैं आके आपको गिफ्ट प्रेजेंट कर रहा हूँ, बिकॉज मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ बिकॉज आप किंग है. तो ऐसे उस टाइम पे लाइक द बिग वॉरियर्स, बिग लैंडलॉर्ड्स, they used to present the gifts to their king so that the king must happy at every scenario. So one such instance was that the Rashtrakutas in the Deccan. Remember thing, abhi maine aapko map dikhaya, I told you why I am showing you a map, right? Rashtrakutas in the Deccan. From where the Rashtrakutas were? Deccan. Got it? That is the Rashtrakutas in the Deccan. Initially they were the subordinates of the Chalukyas of the Karnataka. In the mid 19th century, the Dantidurg, the Rashtrakuta chief, overthrew his Chalukya landlord and performed a ritual called the Hirangarbha. Right, literally means the golden war. Fine. When this ritual was performed with the help of the Brahmins, they were thought to lead the rebirth of the sacrificers as a Kshatriya, and even if they were not the one by birth. So what happened? Rashtrakutas, like हमारे यहाँ पे डिविजन हुआ है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध का, राइट. हमारे यहाँ पे एंशिएंट टाइम पे ये डिविजन चलता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध. ब्राह्मण्स का काम होता था लिटरेरी सोर्स मीन्स बुक पढ़ना, लोगों को समझाना, नॉलेज प्रोवाइड करना, राइट. क्षत्रिय का काम होता था वॉर का, राइट. मीन्स दे आर born for the wars, right, they are born for the fights, right. So they used to do this, but actually what happened, the thing happened was that the Rashtrakuta जो डेक्कन्स में थे उनके साथ में एक एम्पायर हुआ करता था, चालुक्य एम्पायर. तो what Rashtrakutas did, Rashtrakuta overthrew the Chalukyas. मीन्स जो एम्पायर था चालुक्य, उनको उन्होंने निकाल दिया, उन्होंने हरा दिया, और राष्ट्रकूटा ने वहाँ पे जाके बोल दिया, राष्ट्रकूटा पीपल ने बोल दिया, नाउ वी आर द किंग, नाउ आई एम द किंग, राइट. और कैसे उन्हें, किंग का नाम क्या था उनका राष्ट्रकूटा का? दंतीदुर्ग ने बोल दिया, नाउ आई एम द किंग, राइट. सो राष्ट्रकूटा बिकम अ पावरफुल एम्पायर, नाउ दंतीदुर्ग बिकम अ किंग, राइट. और इसको परफॉर्म करने के लिए उन्होंने कौन सी वे यूज करा? हिरियाना गर्भ, राइट, मीन्स गोल्डन वॉर. ये एक रिचुअल होता है एंशिएंट पीरियड में विच द ब्राह्मण्स यूज्ड टू परफॉर्म, राइट, फॉर द रीबर्थ. ड्यू टू दिस सेक्रीफाइस ओनली, मतलब राष्ट्रकूटा क्षत्रिय नहीं थे, माइट बी दे कैन बी वैश्य, माइट बी दे कैन बी शुद्ध, बट दे वर नॉट क्षत्रिय फ्रॉम द बर्थ, दे वर नॉट क्षत्रिय फ्रॉम द बर्थ. बट ड्यू टू द परफॉर्मेंस ऑफ दिस रिचुअल, द गोल्डन वॉर, they declare themselves as Kshatriya. In the other cases, the man from the enterprising family used their military skill to carve up their kingdom. For instance, the Kadamba Maurya Shrama and the Gujar Pratiharas Harishchand were the Brahmins who gave up their traditional performance and took to arms successfully and established the kingdom of the Karnataka and Rajasthan respectively. What they did was they gave up the traditional performance, right. वो like जो भी उस टाइम पे उनका रिचुअल था, if like whatever उनका रिचुअल था, they dropped their rituals, they dropped their practices, they dropped their occupations, and they took up the arms and they fought and made their kingdoms, right. Actually they were also not the Kshatriya by birth, but they
took up the weapons and fought, and then this Gujar Pratihara's kingdom in the Rajasthan region was set up by the Harishchandra. By whom? By the Harishchandra. So now, like you have seen over here, the new kingdoms are emerging. Like we have studied about the Rashtrakutas, how Rashtrakutas has emerged. We have studied about the Gujar Pratiharas, how they have emerged. राइट सो न्यू किंगडम्स, नए किंग्स आ रहे हैं, नए किंगडम्स बन रहे हैं, पुराने किंग्स को हटा रहे हैं और रिप्लेस कर रहे हैं और अब खुद अपने आप को किंग डिक्लेयर कर रहे हैं. राइट, लाइक यू कैन सी ओवर, लाइक वी टॉक्ड अबाउट द राष्ट्रकूटास एंड द गुजर प्रतिहारास. So here is the Rashtrakutas and here is the Gujar Pratiharas, and now afterwards they are going to fight for the Connous. They are going to fight for the Connous, and what we call to this war, right, the fight between the Pals, Gujar Pratiharas and the Rashtrakutas, we call this war as tri-party war. Tri-party war. We call this war as tri-party war. Fine. So let us begin with our new chase. Right. So the administration in the kingdom. Many of these new kings adopted the high-sounding titles, high-sounding titles like Maharaja, Adhiraja, Tirubhunam, Chakravirtan, and so on. So what is this? Right now the adoption of this title is banned by the government of India. Not actually banned by the government of India, it is banned by the Constitution of India. Right? Our Constitution, Indian Constitution, does not allow you to have these titles. आपको भारत का संविधान ये चीज़ अलाउ नहीं करता है कि आप ऐसे अपने नाम के आगे टाइटल्स लगाओ, राइट, महाराजा, अधिराजा, राइट. This kind of titles are not allowed. But in the ancient, in the medieval time period, these kinds of titles were started and took up by the people, like Maharaja, Adhiraja, Tirubhuvan, Chakravirtan, right. So these titles were used by those kings and kingdoms, those kings of that period. However, in spite of such claim, they often shared the power with the Samantas and as well as with the associates, right, of the peasants, traders and the Brahmins. In each of these states, the resources were obtained from the producers, and that is the peasants, cattle keepers, artisans, and who were often pursued and compelled to surrender the part of what they produce. Sometimes these were claimed as the rent, and due to the lord who assert that he owned the land, and the revenue was often collected from the traders. Right. The resources were used to finance the king's establishment as well as the construction of the temples and the forts, and they were used to fight wars, and which were in turn expected to lead the acquisition of the wealth in the form of the plunder, the access to the land as well as the trade routes. The functionaries for the collection revenue were generally recruited and the influence family and the position and were often hereditary. Right, this was turned about the army as well, and in many cases the close relevancy of the king held the big position. So what they are speaking to us? They are speaking to us like this. People used to submit this rent to whom? To the lords who assert the honor of the land, right? And the revenue was collected by the traders. Right, so at that time, like right now we are paying tax to the government for the better functioning of the country. In the same manner, in the ancient time, the rents were collected by the landowners and the revenues were collected by the traders. And these rents and revenues then submitted to the king for the better functioning of the kingdom, right, to the better functioning of the dynasty. And this revenue and this was given to the king for the construction of the temples, मंदिर बनाने के लिए, फोर्ट्स बनाने के लिए. ये जो अमाउंट था, जो रेंट थी और रेवेन्यू था, ये किंग को हम सबमिट किया करते थे. जो किंग को सबमिट करते थे, देन किंग उससे ब्यूटीफुल टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करते थे, ब्यूटीफुल फोर्ट्स कंस्ट्रक्ट करते थे. एंड हम सबको पता है, लाइक हम सब वैकेशंस के टाइम पे जाते हैं, बहुत सारे फोर्ट्स देखते हैं, टेम्पल्स देखते हैं, पुराने बहुत बड़े बड़े. वो कहाँ से बने? इस टाइम पीरियड में किंग और किंग्स ने बनाए हैं वो, राइट, और वही हम आज विजिट करते हैं. सो दैट इज उस टाइप से कुछ एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम का किया जाता था, राइट, और वो एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से बहुत ही हेल्प मिलता था.
Fine. So let us begin. What is this Prashasti and the land grants? Prashasti contains the details that may not be literally turned, but they let us how the ruler wanted to depict themselves as a valiant and the victorious war. For example, they were composed by the learned Brahmins who occasionally helped in the administration. प्रशास्ति क्या होता है? लाइक जैसे हमने इंस्क्रिप्शंस और ये हमने जब लास्ट ईयर देखे थे ना, राइट? सो वो क्या थे? इंस्क्रिप्शंस क्या थे? मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन. लाइक इन द सेम मैनर प्रशास्त्री इज ऑल्सो अ इंस्क्रिप्शन. प्रशास्ति में क्या होता है? प्रशास्ति वॉज रिटन ऑन द पेजेस, लाइक यू कैन सी द पिक्चर्स ओवर इन द डाउन साइड. दिस वर रिटन ऑन by the by the Brahmins, right? They were composed by the Brahmins. And what इनके अंदर होता है क्या है? Wars, warriors, victorious warriors and administration. कौन कौन सी वॉर लड़ी है किंग ने, कौन कौन से मैच जीते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है, ये सब कुछ इन चीज़ों के अंदर लिखा होता है. और इनको हम क्या बोलते हैं? प्रशास्त्री और द लैंड ग्रांट्स. अगर किसी को लैंड दिया भी जा रहा है, कि इफ़ किंग किसी को दे रहे हैं या कुछ हो रहा है, वो सारी चीज़ें भी इनके अंदर नोट डाउन करके लिखी जाती थी. मीन्स प्रॉपर अकाउंट मेंटेन किया जाता था बाय द किंग, राइट? द किंग ऑफन रिवॉर्ड द ब्राह्मण्स बाय द लैंड ग्रांट्स ऑफ द लैंड. They were recorded in the copper plates and were given to those who received the land. Means अब लैंड ग्रांट्स अगर मैं आपको लैंड गिफ्ट में दे रहा हूँ तो मैं कैसे दूंगा? मैं आपको लैंड दूंगा, उसको कॉपर प्लेट के ऊपर मैं आपको पूरा उसके अंदर नोट करके दूंगा कि नाउ दिस लैंड बिलोंग्स टू यू, राइट? मैं प्रॉपर अपना नाम, सिग्नेचर सब कुछ करके मैं आपको सबमिट कर दूंगा. इन द सेम मैनर इन द पास्ट दे यूज्ड टू राइट ऑन द copper plates. Usually the 12th century was a long Sanskrit poem contained a history of the king who ruled over the Kashmir. It was composed by the author called Kalhan, right? He used a variety of the sources including the inscription, documents, eyewitnesses account and the earlier history to write his account. Unlike the writers of the Prashasti, he was often critical about the rulers and their policies. So here is a name of a writer, Kalhan, right? This is the name of a writer or the author. इनने क्या किया था? इन्होंने कश्मीर के एक किंग थे, एक कश्मीर के एक रूलर थे, उनके ऊपर प्रशास्त्री के अंदर सब कुछ लिखा है. जिसके अंदर क्या लिखा उनने? उनके बारे में सारा एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ. एक पोएम लिखी है, बहुत लॉन्ग पोएम लिखी है, जो उसके बारे में सब कुछ कंसिस्ट कर रही है उन किंग के बारे में, राइट? व्हाट फ्रॉम उन लोगों को सोर्स कहाँ से मिले, कहाँ से उन्होंने लिख के लिखा, बनाया उस पोएम को? फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस ऑफ द कोर्ट, राइट? अर्लियर हिस्ट्री, रिटन इन द अकाउंट. इन सारी चीज़ों को कंस्ट्रक्ट किया. इंस्क्रिप्शन उन्होंने पढ़े, डॉक्यूमेंट्स पढ़े. बहुत लोगों ने उन किंग को आंखों से देखा था, उनसे सुन के सब कुछ करके उन्होंने एक पोएम लिखी, राइट? पोएम किसके ऊपर? किंग ऑफ द कश्मीर के ऊपर लिखी उन्होंने. पोएट का नाम क्या था? द नेम ऑफ द पोएट इज कलहन, राइट? तो दिस इज द थिंग ऑन द प्रशास्ति, राइट? देन द वॉरफेयर फॉर द वेल्थ. बहुत सारी चीज़ें हुई हिस्ट्री के अंदर. लाइक हमारे कुछ किंग्स थे, लाइक जैसे गुजर प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास एंड पाल्स, हमने इनके बारे में देखा. दे यूज टू फाइट फ्रॉम ईच अदर, राइट? दे यूज टू फाइट टू ईच अदर. उन्होंने फाइट करते रहते थे हमेशा. इसी टाइम पीरियड के कुछ अंतिम एंड में ही बाहर से फॉरेन किंग्स भी इंडिया में इंटर करना स्टार्ट कर दिए. फॉर लाइक मुगल्स, राइट? मुगल्स एंड सुल्तान्स एंड एवरीवन स्टार्टेड एंटरिंग इनटू द इंडिया. अब इससे इफेक्ट क्या हुआ? इससे बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी हुई, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव भी हुई. तो लाइक हम इन चीज़ों को देखेंगे इन द अपकमिंग चैप्टर्स, बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू कवर अ ओवरव्यू, राइट? व्हाट हैपेंड टू दैट. Like I told you, the tripartite struggle. About the tripartite struggle, here it is written. The tripartite struggle. For the centuries, the rulers belonged to the Gujar Pratiharas, Rashtrakutas, and the Pal dynasty. Fought for the control over Connous. I told you what they are fighting for. They are fighting for the Connous because they were the three parties in the long gone conflict. The historians often scripted it as a tripartite struggle. और हिस्टोरियंस ने इस चीज़ को क्या नाम दिया? ट्राई पार्टी स्ट्रगल. ट्राई पार्टी मीन्स थ्री पार्टीज
फाइट कर रही है, स्ट्रगल कर रही है, किसके लिए? कन्नौज के लिए। 3 पार्टीज कौन कौन सी थी? वन इज द गुजर प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास एंड द पाल डायनेस्टी। द रूलर्स also tried to demonstrate their power by the construction of the big large temples, and so when they attacked one another's kingdom they often choose to target the temples where sometime extremely rich. So rulers ने क्या करा, अपनी वेल्थ शो करने के लिए उन्होंने बड़े बड़े और प्रीशियस टेम्पल्स बनवाए, बड़े बड़े और प्रीशियस टेम्पल्स। उन टेम्पल्स से क्या होता था कि वो अपना पावर शो करते थे, लाइक हम कितने वेल्थी, हमारे पास देखो कितना अमाउंट है, कितने वेल्थ है, हमारे पास कितना पैसा है, राइट। तो वो ऐसा शो करते थे। तो जब फाइट होती थी एक दूसरे के बीच में, तो मालूम क्या करते थे? किंग डायरेक्टली टेंपल पे अटैक करते थे। क्यों? क्योंकि टेंपल में बहुत वेल्थ है, बहुत पैसा है वहाँ पे, तो डायरेक्ट वहाँ से वो वेल्थ चुरा के और अपने वहाँ लेके जाते थे और अपने वहाँ पे नया कुछ कंस्ट्रक्शंस करवाते थे, आर्ट वर्क करवाते थे। लाइक इसी चीज़ के लिए सबसे बेस्ट नोन पर्सन ये रूलर कौन है? सुल्तान मोहम्मद गजनी, हु इज द मोस्ट वेटेरियन रूलर ऑफ द टाइम। सुल्तान मोहम्मद गजनी, इन्होंने सबसे ज़्यादा क्या किया? ये कहाँ से आते थे? ये अफ़गानिस्तान से थे, पाकिस्तान से भी नहीं, अफ़गानिस्तान से। इन्होंने सबसे ज़्यादा काम क्या किया? इन्होंने हमारे यहाँ के जितने भी वेल्थी टेम्पल्स थे उन्हों को टारगेट किया, उनकी वेल्थ चुराई और अपने यहाँ लेके गए, चुराया लेके गए। जिसमें से हम एक बहुत ही फेमस टेम्पल को जानते हैं, वो था सोमनाथ, गुजरात में। इन्होंने वहाँ पे भी बहुत बार ये आए, रीड करा, रीड करने के बाद वहाँ से सारा वेल्थ लिया और लेके अफगानिस्तान चले जाते थे। लाइक ही इज़ फ्रॉम द अफगानिस्तान। कौन से पीरियड की बात हो रही है? 907 to 1030। आज हम कहाँ रह रहे हैं? वी आर लिविंग इन 2020। और ये बात कब की है? 997 to 1030। अब आप सोच रहे कितना पुराना, लाइक अराउंड 1000 years ago, 1000 years ago की ये बात है। फाइन, देन much of the wealth carried away were used to create the splendid capital city of the Ghazni. He was interested in finding out more about the people he conquered. He entrusted a scholar named al-Biruni to write an account of the subcontinent. The Arabic worker known as the Kitab al-Hind remains as an important source of historians. He constructed the Sanskrit scholar to prepare his account. Other kings who engaged in the war included the Chamanas, later known as Chauhans, who ruled over the region around the Delhi and the Ajmer. He attempted to expand their control to the west and the east, and they were opposed by the Chalukyas of the Gujarat and the Ghadarwala in the western Uttar Pradesh. The best known Chahamana ruler was the Prithviraj III, who defeated the Afghan ruler named the Sultan Muhammad Ghori in 1991, but lost to him every next year in 1192. Fine. So what was the thing? जो सुल्तान मोहम्मद गजनी थे, इनका सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या थी? ये सारे टेम्पल्स को लूटते थे और सब कुछ करते थे, बट ये जब भी किसी रूलर को हराते थे देन उसके बाद उनके ऊपर एक मीन्स अपने इसमें नोट करवाते थे। तो ये कौन करता था? किताब अल हिंद एक सब बहुत अच्छा एक अरेबिक वर्क है, लाइक एक बुक है। उसके अंदर किसने लिखी है? ये अल बिरूनी ने एक बुक लिखी है किताब अल हिंद, जिसके अंदर जब भी हमारे सुल्तान मोहम्मद गजनी जहाँ पे भी अटैक करते थे, जब भी किसी टेम्पल को उन्होंने तोड़ा है या फिर उन्होंने चुराया है वहाँ से या किसी किंग को हराया है, वो सब कुछ उसके अंदर वो नोट करवाते थे। सो दिस वाज द थिंग, राइट। तो वहाँ से हमको ये सबसे अच्छा इनके बारे में पता पड़ा कि कौन रूलर थे जिन्होंने हमारे यहाँ पे इतनी वेल्थ दी। दिस फोटो, द फोटो यू कैन सी ओवर हियर, दिस फोटो इज एन आर्ट क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ द Sultan Muhammad Ghazni. Fine. So this was the story of the Sultan Muhammad Ghazni. Then what is the story? There was a dynasty known as the Chahamanas. Right? Who was the Chahamanas? This is the another name of Chauhans. बाद में Chahamanas ही चौहान नाम से फेमस हो जाएंगे राजस्थान के अंदर। चौहान्स, और चौहान्स आप जानते हैं, who are the Chauhans? Rajput. Right? Who are the Chauhans? Chauhans are the Rajputs. So
who ruled over the region of the Delhi and Ajmer, जो दिल्ली और अजमेर में रूल करते थे उस टाइम पे, राइट। हुआ क्या, देन आफ्टर सम टाइम दिस चौहान, उनका सबसे फेमस रूलर कौन थे, बेस्ट नोन रूलर पृथ्वीराज थ्री। पृथ्वीराज थ्री ने, जिनको हम सबसे ज़्यादा जानते हैं कि सुल्तान मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज थ्री, दे फॉट अ लॉन्ग टाइम एंड पृथ्वीराज थ्री also defeated the Sultan Muhammad Ghori. So this was the story. We are going to learn about these stories and so on and so forth, right, in our upcoming videos. So I hope this knowledge of the things like कौन कौन से रूलर्स थे, कैसे उन्होंने फॉट किया, कैसे हमको लोगों के बारे में पता पड़ा, ये थोड़ा बहुत आइडिया आपको क्लियर होता जा रहा होगा, राइट। हम ऐसे ही आगे वीडियोस के अंदर आपको पूरा सीनेरियो में आपको क्लियर करूंगा एंड देयर विल बी अ टाइम जब मैं पूरी हिस्ट्री को एक साथ एक वीडियो के अंदर आपको कवर करके दे दूंगा in a short, right? So right now we are going to learn about them. So remember, for today we have to remember the Gujar Pratiharas, Rashtrakutas and Pal dynasty, right? Then we also have to remember about the Cholas dynasty. Then too we have to remember about the Sultan Muhammad Ghazni and the Sultan Muhammad Ghori and Prithviraj III, right? So we are going to learn about these things, right? So I hope that's all for today. Thank you, have a nice day and take care.